Morning to all of you. Yesterday we started the questions on principle of homogeneity, and I have discussed two questions with you. And this was the last question which I gave you as a homework. So today I am going to discuss this. So yesterday I also have already explained you the question. You have an equation P equal to A minus x squared divided by Bt. Here P is your pressure, x is your distance, T is your time. Pressure dimension is ml minus 1 T minus 2. Distance dimension is L and time dimension formula is T. You know that. Here question is you need to calculate the dimensions of A divided by B. So what you have to do, first you have to find the dimension formula for A, then dimension formula for B, then you have to divide both of them. Then you will get the answer of A divided by B. Okay. Now let's start with the solution of this question. In yesterday question which I discussed with you, the question number 2 also, I already told you that whenever you are doing a question based on principle of homogeneity, first go for the plus and minus. Always solve this first, then your question will become more simple. Okay, as we already know, same dimensions can be added or subtracted. So look over here, a minus x square. So a minus x square means that both should have same dimension, because only same dimensions can be added or subtracted. So the dimension formula for a will be equal to x square. So according to principle of homogeneity, same dimensions can be added or subtracted. Can be added or subtracted. Therefore, your a will be equal to x square. It means the dimension of a will be equal to the dimension of x square. Now the dimension of x square, x is L, so x square will be L square. So here you got the dimension of a की dimension आपको मिल गई है. Now our target is to calculate the dimension of b, dimension formula for b. अब उसके लिए क्या करें, पहले इसको पुट कर दो और सॉल्व कर लो. ठीक है. That implies P will be equal to, now in place of A you will write L square, and in place of x square you will write L square. Rest keep them as it is. Okay, first simplify it. Now we already know L square minus L square क्या होगा आपका, L square ही होगा, because same dimensions can be added or subtracted. So L square minus L square will be L square. Zero नहीं होगा, कभी zero put कर दो. L square divided by Bt equals to P. Now look, this relation has simplified to this relation. Now you can put the dimension of the rest things and we can calculate B from here. Now put the dimensions. अब आप डायमेंशन पुट करो और इसको सॉल्व करो. प्रेशर की डायमेंशन पुट करो लेफ्ट हैंड साइड, ml minus 1 t minus 2 L square, and in division you have Bt. So B we have to calculate and time is t. Now you can cross multiply, you can shift the things, so this will come downward, ml minus 1 t minus 2, and here you will get p. Now we don't have m, so m will go upward, m minus 1. Now this L minus 1, when it will go upward, it will become L cube. Now this t minus 2 and t, one t will cancel out and you will get t minus 1 in the denominator. Now this t minus 1 will go upward and become t. So this will be the dimension formula for A. But you have to calculate over here the dimension of A divided by B. So divide them. So sorry, this will be B. Okay. Now divide A by B. Now A is your L square. B m minus 1 L cube and B. Now this m will go upward, it will become m.
minus 1 is in the denominator, it will go in the numerator, becomes n. Now this L square and L cube, they will cancel out and L will be left in the denominator. When that L will go in upward in the numerator, it becomes L minus 1. Now this T from denominator when goes to the numerator becomes T minus 1. So your dimension formula of A divided by will be equal to ml minus 1 T minus 1. If you remember, this is the formula for your coefficient of viscosity. Okay. So here coincidentally the dimension of formula for A by B is equal to ml minus 1 T minus 1. Now look. So what have we done in this question is exactly same as the question number 2. Approach is same. The difference is here we have pressure, in that question we had power. Okay. So whenever you get these type of question, always go for the plus minus first. So here A minus x square was there. So we know that only same dimensions can be added or subtracted. It means both A and x, they both have same dimension. So A will be equal to x square. So A will be equal to L square. Now put these value, L square minus L square. Now L square minus L square is L square. So your equation simplifies to this one. Now you can put the dimension of other physical quantities. Put them and you can calculate B. Now after calculating A and B, divide them, you will get your answer. Now I am moving on to your next question of today, the question number 4. So let's start our next question of today, the question number 4 of your principle of homogeneity, questions of principle of homogeneity. अब देखो फिर से आपके आगे एक इक्वेशन आई है, P इक्वल्स टू A माइनस टी स्क्वायर डिवीजन में B अंडर रूट एक्स. इस क्वेश्चन में डिफरेंस थोड़ा सा ये है, लास्ट क्वेश्चंस के जैसा ही है, बट यहां पर अंडर रूट एक्स है आपके पास, तो थोड़ी सी नई वेराइटी है. नाउ लुक हियर, P इज योर पावर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, is power, work done is ml2t minus 2, t is your time. So the dimension formula for power will be ml2t minus 3. You don't have to cram. With the help of formula you can easily find out. X is t is your time and x is your distance. The dimension formula for distance you know is, okay. For your help I have written over here. In exam no need to write, you can directly write over here. Okay. Now here we need to find the dimensions of A into B. It means our target here is, first we will calculate the dimension formula for A, then we will calculate the dimension formula for B, and then we will multiply them with together and we will get the answer. Okay. Now let's start with the question. अब देखो A minus t square है, तो प्लस माइनस वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं. तो let's start with the solution. P is equal to A minus t square डिवीजन में B अंडर रूट एक्स. अब मैंने पहले भी बताया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चन में सीधी डायमेंशन फॉर्मूला पुट मत करना, यू विल नॉट रीच एट एनीवेयर. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई इट. कैसे सिंप्लीफाई करोगे? लुक ओवर हियर, यू हैव a माइनस टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर, एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. इट मींस a माइनस टी स्क्वायर मींस बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशंस. सो अकॉर्डिंग टू principle of homogeneity, same dimensions, you have to write the reason, same dimensions can be added or subtracted. Therefore dimension of A will be equal to t square. Okay. Now the dimension of t is t, so t square will be t square. So A की dimension हमारी आ गई है t square. नाउ अब क्या करें, इसको पुट करो ऊपर. अब A की जगह पुट कर सकते हो टी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लो, और टी स्क्वायर की जगह अपना टी स्क्वायर पुट कर दो, डिवीजन में B अंडर रूट एक्स. नाउ यू नो सेम डायमेंशंस, L minus L gives you L, L plus L gives you L, so t square minus t square gives you t square. देखो जो इक्वेशन ऐसी थी सिंप्लीफाई होकर ये बन चुकी है. अब क्या करो, बाकी की डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर दो. सो पुट द डायमेंशंस. डायमेंशन पुट कर दो. P इज योर पावर, डायमेंशन है ml2t minus 3. राइट हैंड साइड यू हैव t square and in downward you have B.
अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मतलब है आपका आएगा अंडर रूट एल, और अंडर रूट एल को आप कैसे लिख सकते हो, एल की पावर 1/2, ये लिख दिया मैंने, एल की पावर 1/2, ठीक है। सोल्व करना अपने लिए इजी रहेगा, ठीक है, इस तरह से आप लिख देना। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट बी, तो बी को ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, एंड दिस यू कैन ब्रिंग इन द डिनोमिनेटर। यह आ गया टी स्क्वेयर, नाउ m l2 t minus 3, and this is your l power half. Now look, we only have m over here, no m in the numerator, so no cancellation, m will go upward, it will become m minus 1. Now here l ki power 2, here l ki power 1/2, so 2 plus 1/2 will be 5/2, and 5/2 when go in the numerator becomes minus 5/2. Now time, here t is minus 3, here t is power 2, so this minus 3 when go upward will become positive, so t की power 2 and t की power 3, but they will multiply and will get t की power 5, ठीक है। This is pure mathematics, आपका mathematics है। If you are good at mathematics till class 10, if you know the basic mathematics, you can solve these. So I have got the dimension formula for A and dimension formula for B. Okay, now our target is to calculate A into B, so multiply them. तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, m minus 1 l पावर minus 5/2 and t पावर इज 7. सो आंसर थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ये सर minus 5/2 एंड आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर कैसा भी हो सकता है, इफ यू आर करेक्ट डूइंग योर थिंग, द अप्रोच इज करेक्ट, देन योर आंसर विल ऑल्सो बी करेक्ट। यही आंसर है इसका, m minus 1 l की पावर minus 5/2 t की पावर 7. So till now I have discussed 4 questions with you of your questions on principle of homogeneity, and I have discussed your different variations of the questions which can be asked in your school exam plus your competition also. From here they are going to ask you. Now I am moving on to the next question, question number 5. Chalo, let's start with the next question of your question of principle of homogeneity. This is a different variety, and this is very important question from the exam point of view, your competition exam point of view plus the school point of view. Okay, very important question. अब इस question में he is going to test your all the skills you have learned till now. अब देखो इसमें सब कुछ है, प्लस भी है, here you are having numerator and denominator means fraction also, so all concept will be checked over here in this question. देखते हैं question में क्या है. Okay, let's start. Now you know the principle of homogeneity, that if a formula is correct, then left hand side dimension will be equal to right hand side dimension, plus only same dimension can be added or subtracted. So both principles will be used over here. तो start करते हैं. अब देखो, in left hand side you have velocity. So when I move from velocity to the right hand side, I get a. मुझे a मिल गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन. इसका मतलब मेरा v किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा. तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी माय v विल बी इक्वल टू a. अब आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी गेट प्लस साइन, हमें प्लस दिखता है, और प्लस के बाद लिखा है bt. So we know only same dimensions can be added or subtracted. So whatever is the dimension of a should be the dimension of b into t. और a की dimension क्या है, b है. So the dimension of bt will also be equal to b. bt will also be equals to b. Now after that, when I move forward, I am again getting plus, and then I am getting c upon my d plus t. Now we know only same dimensions can be added or subtracted. It means whatever is the dimension of bt, the same dimension should be for c divided by d plus t.
and the dimension of bt is equal to v. So the dimension of c upon में d plus t will also be equal to v. Okay, so in this way you have to approach. Now from here I get the dimension formula a will be equal to the velocity is lt minus 1. So a का मुझे मिल गया भाई lt minus 1. अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं. देखो b t equals to lt minus 1. Now when you will divide it, okay, oh sorry, we have t over here. So when you will divide it, the t will go in the numerator and you will get lt minus 2. तो देखो a and b की डायमेंशंस हमें मिल चुकी है. ठीक है, अब हमारा टारगेट है c and d की निकालना. अब इस पे ऑब्जर्व करो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. It is just like the questions we have just discussed, the fraction questions, and we have discussed and we have completed our difficult questions of fractions, and this is very easy. So approach it the same way we have discussed our last questions. ठीक है, this is your fraction, and you know whenever fraction is given to you, then always go for the plus thing first. Okay, d plus t is given to you. It means whatever is the dimension of d should be equal to the dimension of t. Okay, so using principle of homogeneity, same dimension can be added or subtracted. So your d will be equals to t. Now the dimension of time is t. So your d will be equal to, so we have got the dimension of t, d also. d की भी मिल गई हमें. So a मिल गया, b मिल गया and d मिल गया. Now we have to calculate c. और उसके लिए क्या करो, इसको पुट कर दो इक्वेशन में. That implies your c divided by t plus t will be equal to v. Now you know time plus time gives you time. So you will get c divided by t equals to v. Okay. Now the equation from here simplifies to this one. Now you can put the dimension of others also. So put dimensions. You will get c upon में t equals to lt minus 1. Now when you will cross multiply it, you will get lt minus 1 multiplication with t. Now here you have t minus 1, here you have t, so this will cancel out. So you will get c equals to l. So हमें c की डायमेंशंस भी मिल गई. तो इस क्वेश्चन में उसने हर चीज टेस्ट कर ली. उसने आपको एक इक्वेशन दी और जैसे ही मैंने इसको देखा v में लेफ्ट हैंड साइड वी हैव v, so when I move on to the right hand side I get a, and we know left hand side dimension should be equal to right hand side dimension, so v will be equal to a. Now जब मैं आगे बढ़ा तो a प्लस लिखा हुआ था एंड प्लस के बाद लिखा है bt. अब हमें पता है ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सो व्हाटएवर इज द डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ bt. तो मैंने लिख दिया bt इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a एंड द डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू v. सो v के इक्वल आ जाएगा. इसके बाद bt के आगे फिर से प्लस लिखा है और उसके आगे लिखा है c अपॉन में d प्लस t. सो व्हाटएवर इज द डायमेंशन ऑफ bt शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ c अपॉन में d प्लस t. अब bt की डायमेंशन किसके इक्वल आई है, v के इक्वल. तो c अपॉन dt भी किसके इक्वल होगा, v के इक्वल. लिख दिया मैंने. यहां से इसको सॉल्व किया, a मिल गया, सॉल्व किया b मिल गया, एंड यहां पर हमने देखा ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया. तो यहां पे c डिवाइड बाय d प्लस t था, तो सबसे पहले प्लस को सॉल्व कर लो. हमें पता है सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सो व्हाटएवर इज द डायमेंशन ऑफ d शुड बी इक्वल टू t. तो d इक्वल्स टू t, सो d विल बी इक्वल टू t. आपका डायमेंशन फॉर्मूला t का टाइम का यही होता है. तो d मिल गया. अब इसको पुट कर दो यार. सो t प्लस t एंड t प्लस t गिव्स यू t. Now you can put the dimension of v also. Cross multiply करो, you will get the dimension of c equals to l. So in this way you have to approach in these questions. So I have discussed 5 questions with you. 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं. 5 अलग अलग वैरायटी डिस्कस की है. In my next video I will be discussing the 3 more varieties with you. 3 से 4 वैरायटी और डिस्कस करूंगा. So
टिल देन कीप रिवाइजिंग, रिवाइज करते रहना इस कंसेप्ट को, एंड यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ आल्सो. If you practice the question by yourself, you will gain confidence and it will be better for you. खुद से भी प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस को, अप्रोच यही रहेगा. कल मैं आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करूंगा, कुछ नई वैरायटीज. टिल देन बाय एंड टेक केयर.